हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप एवरीवन फाइन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2018 में जो सीसेट आया था उसके अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा गया था। 196 तक हमने देख लिया था कल की वीडियो में। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 197 से। 6 तक देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट रेशनल एंड क्रूशियल मैसेज गिवन इन द पैसेज। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। द quest for cheap and plentiful meat has resulted in factory farms where more and more animals are squeezed into smaller lots in curious and shocking conditions में उनको रखा जा रहा है. Such practice have resulted in many of the world's health pandemics such as avian flu and worldwide livestock are increasingly raised in cruel. इनके साथ कुछ बोल सकते हैं जो बात की गई उसके कनेक्ट में क्रुएलिटी हो रही है. Cramped conditions where animals spend their short life under artificial light pumped full of antibiotic growth hormone until the day they are slaughtered. जब तक उनको नहीं काट दिया जाए. Meat production in is water intensive है. 1000 50,000 liter of water is needed to every kilogram of meat compared to 3,400 liter of rice. ठीक है. 3,300 liter for egg and 255 liter kilogram of potato. ये आपका वाटर कंजप्शन दिखाया गया है. तो मोस्ट रेस में कौन सा मास प्रोडक्शन ऑफ मीट थ्रू इंडस्ट्रियल फार्मिंग इज चीप. चीप है एंड सुटेबल है फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटीन. नहीं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं. मीट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री वायलेट्स द लॉ अगेंस्ट क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स. वी डोंट नो. Mass production of meat through industrial farming is undesirable and should be stopped immediately. Immediately, how can we stop? Environmental cost of meat production is unsustainable when it is produced through the industrial farming. Yes, it is more relevant regarding the basis. Option number D is right. सबको ऐसे ही एग्जाम के अंदर देखना है तो पॉजिटिव अप्रोच की जो आपको दिखे एंड जिसका डायरेक्ट रिलेशन भी हो, दैट विल बी योर आंसर. नेक्स्ट इज ए मेल टाइगर वाज रिमूव्ड फ्रॉम पेंस टाइगर रिजर्व. इसको रिमूव कर दिया गया एंड वाज रिलोकेट किया गया पन्ना नेशनल पार्क के अंदर. लेटर दिस टाइगर ट्रैकल टुवर्ड हिज होम 250 miles away. The track of his solitary tiger highlight a crisis. Many wildlife reserve exist as an island of fragile habitat in a vast sea of humanity. ये टाइगर्स कैन रेंज ओवर 100 miles seeking prey, mates and territory. सुन सकते हैं. Nearly a third of India's tiger are outside tiger reserve. मतलब 33% टाइगर रिजर्व से बाहर है. सिचुएशन दैट इज डेंजरस है फॉर ह्यूमन एंड एनिमल दोनों के लिए. Prey and tiger are only dispersed. They are recognized corridor of land between protected areas to allow unmolested assets. Which of the following is most common? Conflict between man and wildlife cannot be resolved no matter what effort you make. ऐसा नहीं, इतने नेगेटिव स्टेटमेंट को हाउ we can take. नेक्स्ट, सेफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बिटवीन प्रोटेक्टेड एरियाज एसेंशियल है. यस, एसेंशियल को यहाँ पे नेगेटिव वे में नहीं लेना, इसको एक बार ट्रीट करना है पॉजिटिव के तरीके से. इंडिया नीड टू डिक्लेयर मोर प्रोटेक्टेड एरियाज एंड सेट मोर टाइगर रिजर्व्स. यार ज्यादा क्या हो सकता था, क्योंकि 33% तो हमारे 12 है. अब 12 आप किसी अर्बन एरिया में नहीं बना सकते. इंडियाज नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व नीड टू बी प्रोफेशनली मैनेज. प्रोफेशनली का कैसे? ऑप्शन बी इज राइट. विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन कौन कौन सी हो सकती है? Strategy of conservation of wildlife by relocating them from one protected area to another is not often successful. कि उसको हमने दूसरी जगह रिलोकेट किया कि ये सक्सेसफुल नहीं है. देखते हैं. इंडिया डज नॉट हैव सस्टेनेबल लेजिस्लेशन नहीं है टू सेव द टाइगर. यार इसकी हमने क्या बात की है? एंड इट्स कंजर्वेशन एफर्ट हैव फेल्ड व्हिच फोर्स द टाइगर टू आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया. हाउ वी कैन सी? सो फर्स्ट हम कंसीडर कर सकते हैं स्ट्रेटजी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ by relocating the from one protected is not fully successful. So option A. Next, all action address climate change ultimately involves cost. इसमें आपकी cost लगेगी. Funding is vital in order for countries like India to design and implement adaptation and mitigation plan and project. The problem is more severe है किसके लिए? Developing countries के लिए like India, which would be one of the hardest hit है by climate change से. Given its need to finance development, most countries do indeed treat climate change as a real threat and are striving to address it in a more comprehensive and integrated manner में करना चाहिए with the limited resources at their disposal. कौन से यहाँ पे assumption बनाई जा सकती है? क्लाइमेट चेंज इज नॉट ए चैलेंज फॉर डेवलप कंट्री. देखो, इंडिया के लिए है, लेकिन हम ये कैसे बोल सकते हैं कि क्लाइमेट डेवलप के लिए नहीं है? अगर इसको हम कट करते हैं, लेट्स से
हमारे पास दो चॉइस, मतलब थर्ड तो ठीक है। वेज एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस मस्ट बी फाउंड टू enable डेवलपमेंट कंट्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। क्लाइमेट चेंज कॉम्प्लेक्स पॉलिसी है एंड ऑल्सो डेवलपमेंट इश्यू फॉर मैनी कंट्रीज। 200 का सी, दोनों की आपकी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट, कुकिंग विद बायोमास एंड कोल इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड टू कॉज है बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम का। विद वुमेन एंड चिल्ड्रंस इन पुअर पॉपुलेशन facing the greatest risk ये फेस कर रहे हैं, and there are more than 10 lakh premature death हो रही है from household air pollution due to polluting cooking fuels, with another 1.5 lakh की इसकी वजह से contribution to general outdoor air pollution in the country. Although fraction of the India's population using clean cooking fuels such as LPG electricity is slowly rising, number using polluting solid fuels as their primary cooking fuels has remained static for nearly 30 years, about 70 crore. मोस्ट क्रूशियल कौन सा है? रूरल पीपल आर गिविंग अप द यूज ऑफ पोल्यूटिंग सॉलिड वेस्ट। तो एग्जैक्टली रूरल पॉपुलेशन हम कैसे बोल सकते हैं इसमें? ये तो हाउस होल्ड का बोल रहा है। सब्सिडाइजिंग द यूज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल्स विल बी सोल्व द इंडिया प्रॉब्लम इन इंडोर। सब्सिडाइजिंग वी कैन से, बट डायरेक्टली इस करेंगे। इंडिया शुड इंक्रीज इट्स इंपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस एंड प्रोड्यूस, yes it is more strong, and access the cooking fuels can reduce premature death for household. The most appropriate answer इन्होंने दिया है डी को, कुकिंग गैस को यूज कीजिए। नेक्स्ट इज साइंटिफिक नॉलेज एज इट डेंजरस है, बट सो हैव वेरी ग्रेट थिंग्स ओवर एंड बियॉन्ड द डेंजर with which it threatens the present. It opens up in nothing else can the vision of possible happy world, a world without poverty, without war, with little illness, science whatever unpleasant consequences it may be in its very mature natural liberator. कौन सा important implication है? A happy world is a dream of science. Science only can build, but it is also major threat है. Happy world is not possible without science. Happy world is not at all possible with or without science. तो दोनों का इन्होंने तो क्रिटिसाइज कर दिया यहाँ पे। तो हैप्पी वर्ल्ड इज a dream of science is more appropriate option A. नेक्स्ट, आर्कटिक वास्ट रिजर्व है यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स, आर्कटिक सर्किल की बात की गई है। फिश एंड मिनरल्स हैं आर नाउ एक्सेसिबल फॉर लॉन्गर पीरियड इन इंडिया, बट अनलाइक अंटार्कटिका विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लोरेशन से है बाय अंटार्कटिका ट्रीटी फ्रेम ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर में अपने फ्रेम की थी, इज नॉट सब्जेक्टेड टू टेरिटोरियल क्लेम्स। आप नहीं कर सकते कोई भी कंट्री जाके। देयर इज नो लीगल रिजाइम प्रोटेक्टिंग द आर्कटिक को कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने प्रोटेक्ट नहीं करा, स्पेशली एट ए टाइम्स व्हेन द वर्ल्ड क्रेव्स फॉर मोर एंड मोर रिसोर्सेज की बात करें। डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी of ice-free summer has promoted countries with Arctic coastline to scramble the great chunk of the melting ocean. Most important implication कौन है? India have the territorial claim है the Arctic access to यार इंडिया का कोई रोल ही नहीं है। Melting of the summer ice in Arctic lead to change in the geopolitics. Yes, it can be. यहाँ पे लोग वो करते हैं। Arctic Ocean will solve the world's future problem, कैसे solve करेगा यार? The Arctic region has more resources than Antarctica. तो resources का हमें क्या पता Antarctica में कितने हैं? So more appropriate that is option B. Being a member of WTO, India is bound है इससे by agreement that have been signed and ratified किए गए थे जो कि इसके मेंबर ने मिलके किए, including itself. According to Article 6, sorry, ये लिखा हुआ है Article 6 of Agriculture Agreement, providing minimum spot price provide करवाता है agriculture product को, is considered distorting and subject to limits. ठीक है, ये आप इकोनॉमी में पढ़ते हो। The subsidy arising from minimal support cannot exceed 10% of the value of agriculture production for developing countries. इससे ज्यादा ना हो। PDS in India entails minimum support price and public stock holding of food grains. It is possible that in some years the subsidy to producer will exceed 10% the value of agriculture production. Crucial message कौन सा है? India should revise its PDS. India should not be a member in India. Food security followed with trade will provide food to poor. यहाँ पे इसके कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं कि इंडिया को क्रिटिसाइज काइंड ऑफ किया जा रहा है, इंडिया इसको वॉलेट सा ही कर रही है। ठीक है, सी प्रेसिडेंट जो दिया है उसका आंसर देना, बाकी यहाँ पे इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज
फॉलोइंग assumption कौन सी बन सकती है, चलिए पढ़ते हैं। इंडिया एजुकेशनल सिस्टम इज मॉडल है उन मास एजुकेशन सिस्टम जो कि 19th सेंचुरी में यूरोप में डेवलप किया था एंड लेटर स्प्रेड हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर। द गोल ऑफ द सिस्टम इज टू कंडीशन चिल्ड्रन ए गुड सिटीजन बनाना है, प्रोडक्टिव वर्कर। दिस सूटेड द इंडस्ट्रियल एज में अच्छा था, नीडेड द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स की आवश्यकता थी, विद नैरो सेट ऑफ कैपेबिलिटीज की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिजेंबल करते हैं फैक्ट्रीज विद बेल्स, यूनिफॉर्म बैच प्रोसेसिंग ऑफ लर्नर्स designed to get learner to conform. But from an economic point of view, the environmental today is very different. Environment बहुत अलग है. It is complex, है volatile, है global interconnected world with. India continue to developing countries essentially due to quality education system. Today's learner need to acquire new age skill. A good number of Indians to go to some developed country for education because education system there is a perfect reflection of society in which they function. Perfect काम कैसे बोल सकते हैं? India learner need to acquire new age of skill, we can say is more appropriate. Only B is right answer. ठीक है, इसकी वजह से आपके तीनों कट गए, 3 की वजह से। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ डाइटिंग हैज बिकम एन एपिडेमिक बन चुका है डाइटिंग का। लोग डाइटिंग कर रहे हैं। एवरीवन इज लुकिंग फॉर इट्स वे टू अटेन द परफेक्ट बॉडी। वी आर ऑल डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू आवर एथनिसिटी, जेनेटिक्स में, फैमिली हिस्ट्री, जेंडर, एज, फिजिकल एंड मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल, सारे हमारे अलग हैं, प्रेफरेंस अलग है। देयर वाई वी आल्सो डिफर इन फूड, वी टॉलरेट, वी सेंसिटिव किसके लिए है। तो वी रियली कैन नॉट रिड्यूस सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज को हम नहीं कर सकते वन डाइट और डाइट बुक के हिसाब से। दिस एक्सप्लेन द फेलियर ऑफ डाइट अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड इन कर्बिंग ओबेसिटी, like the reason for weight gain are well understood and addressed, and unless habit are changed permanently, no diet is likely to be succeed. Most crucial concern, obesity has become epidemic all over the world. This actually failure of diet across the world in curbing obesity. Yes, it kind of. Lots of people are obese, attaining perfect body. Obese हो रहे हैं इसके लिए. Obesity essential है disease का. There is no perfect diet. कैसे नहीं हो सकता? Okay. Okay, already hypothesis करनी that individual differ in many respected, so there is no perfect solution. हाँ, कोई एक solution नहीं हो सकता है. Okay, ऑप्शन नंबर डी। मोनोकल्चर, जो कि आपका सिर्फ आप एक ही क्रॉप लगा रहे हो हर साल, कैरीज ग्रेट रिस्क। सिंगल डिजीज और पेस्ट कैन वाइप आउट स्वेथ ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन को खराब कर सकता है। An alarming prospect given that is growing and wealthier population will eat 70% more by 2050. The risks are magnified by changing climate. As the planets warm, जैसे जैसे आपका जो planet गर्म हो रहा है, monsoon rain intensify, farmland in Asia will flood, North America more intense drought आ रहे हैं, crop disease will spread in new latitude बन रहे हैं। कौन सा आपका crucial message रहेगा इसमें? Preserving crop genetic diversity against the, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि diversity की हमने बात है, ये क्या कि monoculture करेगा, despite great risk, monoculture is the only way to ensure food. More and more genetically modified crops only कैसे यार? In Asia and North America is a roast suffer from climate change and consequence storage shortage of food. तो फूड शॉर्टेज हम एग्जैक्टली यहाँ पे दोनों कंटेक्स्ट में नहीं बता सकते, बट ऑप्शन वन तो बिल्कुल ठीक है, इंश्योरेंस की तरह काम करेगा। क्या करेगा? जेनेटिक डाइवर्सिटी अलग अलग टाइप की है। नेक्स्ट इज, इट इज नो लॉन्गर इनफ फॉर अस, हमारे लिए ज्यादा दिन ये नहीं रहेगा कि टॉक अबाउट प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, मेकिंग अवेलेबल स्कूलिंग फैसिलिटीज एंड एसेंशियल प्रीक्विसाइट है, बट इट इज इनसफिशियंट है टू एंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन स्कूल को अटेंड करेंगे और लर्निंग सीखेंगे। क्या जरूरी, क्या पार्टिसिपेट करेंगे, ये जरूरी नहीं है, मतलब वो लोग अपने आप से आए या फिर हम कर देंगे तो आए। द स्कूल मे बी देयर बट चिल्ड्रन मे नॉट अटेंड देम, may drop out after a few months. Through school and social mapping, we must address the entire gamut of social and economic and linguistic pedagogic issues हमें देखने चाहिए। फैक्टर दैट प्रिवेंट करते हैं चिल्ड्रन को फ्रॉम वीकर सेक्शन डिसएडवांटेज ग्रुप को, एज ऑल्सो गर्ल्स फ्रॉम रेगुलरली अटेंडिंग कॉम्प्लीमेंटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हमें करनी चाहिए। फोकस किस पे होना चाहिए ये भी याद रखो, फोकस मस्ट ऑन द पुअरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल थिंग्स, दीज ग्रुप आर मोस्ट डिसएम्पावर्ड हैं एंड एट द ग्रेटर रिस्क है वायलेशन ऑफ डिनायल ऑफ द राइट ऑफ एजुकेशन। तो ये आपके सबसे ज्यादा थ्रेट के हैं।
देन राइट ऑफ एजुकेशन गोज बियॉन्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के आगे जाता है टू इंक्लूड क्वालिटी एजुकेशन भी आना चाहिए। क्वालिटी इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट है राइट ऑफ एजुकेशन का। इफ एजुकेशन प्रोसेस लैक क्वालिटी नहीं होगी, चिल्ड्रंस आर बीइंग डिनाइड देयर राइट, तो उनको राइट उनका नहीं मिल रहा। The right of children are free and compulsory education act lays down the curriculum should provide for learning through the activities, exploration, discovery। आप बताइए बच्चों को, this place an obligation है हम सब पे to change our perception of children as passive receiver of knowledge and to move beyond the convention of using textbook as the basis of examination। the teaching learning process must become stress free होना चाहिए। मैसिव प्रोग्राम होना चाहिए for circular reform के लिए। should be initiated to provide a child friendly learning system हो that is more relevant है and empowering। टीचर्स अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एंड प्रोसेस मस्ट एंश्योर करे that children are learning and their right to learn in a child friendly manner में रह रहे हैं, उसको वायलेट नहीं किया जा रहा। टेस्टिंग एंड असेसमेंट होना चाहिए, must be re-examined, redesigned to ensure that these do not force the children to struggle between the school and tuition center and bypass childhood। सारी चीजों का कॉम्बिनेशन लेना है भाई। अकॉर्डिंग टू द पैसेज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस कौन सी है? सेंडिंग चिल्ड्रंस बाय ऑल पेरेंट्स, वी कैन सी, देखते हैं हो सकता है बट अगेन एक्सट्रीम ऑल पेरेंट्स बता दें। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यस वी हैव डिस्कस्ड। करिकुलम रिफॉर्म टू चाइल्ड फ्रेंडली, यस। ओके ओके ओके, पैरामाउंट इंपॉर्टेंट राइट टू एजुकेशन। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्कूल, ओके ओके, नहीं ले रखा इसमें, नहीं कहीं पे गलत पड़ा, एक मिनट। इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल स्ट्रेस फ्री टीचिंग करिकुलम, ओके ओके ओके, ठीक है। विद रेफरेंस टू द पैसेज फॉलोइंग assumption कैन बी मेड। राइट ऑफ एजुकेशन गारंटी करती है टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी को फॉर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन। टीचर्स अकाउंटेबिलिटी सिस्टम एंड प्रोग्रेस मस्ट एंश्योर दैट चिल्ड्रन लर्निंग होती है। राइट ऑफ एजुकेशन 100% एनरोलमेंट कैसे हम बोल सकते हैं, तो दो को हम काटते हैं। राइट ऑफ एजुकेशन टेक फुल एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, हाउ वी कैन से 209 में सिर्फ ए आपका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल इन ब्रिंगिंग क्वालिटी एजुकेशन, किससे आ सकती है भाई? एंश्योरिंग रेगुलर अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज टीचर, दोनों की अटेंडेंस हम कैसे बोल सकते हैं? क्वालिटी कैसे आएगी इससे, ठीक है। गिविंग पेक्यूनियरी बेनिफिट दो, टीचर्स को मोटिवेट करो, उनको सैलरी भी देते हैं। अकॉर्डिंग टू द सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड करो उसको। इंक्यूलेटिंग लर्निंग थ्रू एक्टिविटी एंड डिस्कवरी, यस बोथ आर इक्वली गुड स्टेटमेंट, बट हमें इसको मोस्ट प्रोबेबली देखना तो डी एक्टिविटीज की बात की। एसेंशियल मैसेज क्या है यहाँ पे? राइट ऑफ एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, नो। राइट ऑफ एजुकेशन इनेबल द चिल्ड्रन ऑफ पुअर एंड वीकर सेक्शन, यस वी कैन से। पेरेंट्स शुड इंश्योर, तो ये अलग आपका राइट ऑफ एजुकेशन फ्री enable the children right to free and compulsory education should include होना चाहिए क्वालिटी भी, ओके ओके, ऐसे आपको पूरी पढ़ना है। मैंने आज फर्स्ट टाइम सारे ऑप्शन नहीं पढ़े एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन ये भी आपको गवर्नमेंट स्टूडेंट्स और ऑल द चिल्ड्रन। नेक्स्ट, ग्लोबल पॉपुलेशन अराउंड 1.6 बिलियन थी 1990, टुडे आपकी 7.2 बिलियन थी और ग्रो कर रही है। रिसेंट एस्टिमेट क्या है? 9.6 हो जाएगी 2050 में, 10.9 हो जाएगी 2100 के अंदर। लाइक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका वेयर ओनली 3 to 4% डिपॉपुलेशन इन एज एग्रीकल्चर, 47 है इंडिया के अंदर, डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। इवन इफ इंडिया कंटिन्यूज टू डू वेल इन द सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पिक्चर एक्सपेक्टेड दैट 2030 व्हेन इंडिया ओवरटेक चाइना मोस्ट पॉपुलस अभी बन चुके हैं, नियरली 42% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन आपके एग्रीकल्चर पे रहेगी। तो कौन सा बताया? प्रोस्पेरिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। इंडिया इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंड है, यस इट काइंड ऑफ, बट अगेन 42 है ग्रेटली। इंडिया शुड बी स्ट्रिक्ट मेजर लेना चाहिए रैपिड पॉपुलेशन में, नो। इंडिया फार्मिंग कम्युनिटीज स्विच ओवर टू अदर ऑक्यूपेशन टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है प्रोस्पेरिटी आपका एग्रीकल्चर पे। नेक्स्ट इज मैनी पैथोजेंस दैट कॉज फूड बोर्न डिजीज या फिर इलनेस कर सकते हैं, अभी तक उनको हमने
जाना नहीं है, अननोन हमारे लिए। फूड कंटेमिनेशन कैन अकर कर सकते हैं एट एनी स्टेज फ्रॉम फार्म टू प्लेट, खेत से लेके आपकी प्लेट तक, सिंस मोस्ट केसेज ऑफ फूड पॉइजनिंग वो अनरिपोर्टेड ही हैं अभी तक। द ट्रू एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल फूड बोर्न इलनेस इज अननोन अभी तक। Improvement in international monitoring have led to great public awareness, yet the rapid globalization of food production increased consumer vulnerability by making food harder to regulate and trust. We have the world on our plate, says an official of WFP. हमारे खाने में खाने की प्लेट पे संसार है। चलो देखते हैं मोस्ट लॉजिकल कोरोलरी कौन सी। विद मोर ऑप्शन ऑफ फूड कम फ्रॉम मोर रिस्क। ओके, फूड प्रोसेसिंग इज द सोर्स, वैसे क्या सोर्स, it should depend on locally, globalization of food should be curtailed, an interest statement, and with more option है तो उसके साथ हमारे रिस्क भी ज्यादा है। ठीक है, उन्होंने बताया था प्लेट से लेके। I am a scientist privileged to be somebody who tries to understand nature using the tools of science, but it is also clear that there are some really important questions हैं that science cannot really answer नहीं कर सकती, such as why is there something instead of nothing, nothing की जगह something क्यों है, why we are here. In those domains, I have found the faith provide a better path to answer. I find it oddly anachronistic that in today's culture, that there seem to be widespread presumptions and that scientific and spiritual was incompatible. Most logical rational inference कौन सा है? It is the path of knowledge and science. We can really solve the problem of mankind. Science and faith can be mutually complementary if their proper domains are understood. Yes, it is statement. There are some very fundamental question है which cannot be answered either by science or faith. In today's culture, scientific are given more importance than spiritual. You can see today's culture there are seem to be widespread presumption that scientific and spiritual are incompatible. But one for म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री जो हमने डिस्कस किया। देखो आपको एक चीज समझ जानी, जिस अगर आपने इतनी पैसेज सॉल्व किए हैं अराउंड 215 क्वेश्चन 214 क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, ठीक है, आई थिंक आप साथ साथ कर रहे होंगे, तो आपको एक यूपीएससी का जो आंसर लेने की थीम है थोड़ी थोड़ी फील आने लगेगी। ठीक है, ये आंसर लेगी पॉजिटिव अप्रोच के साथ, सॉल्यूशन बेस्ड, उसी हिसाब से अपनी एग्जाम की तरह वट एवर यूर माइंड सेज, बट आपको यूपीएससी की तरह ही सोचना। द ऑथर वांट्स इंडिया टू राइड हिमसेल्फ, देखते हैं। Though I was discarded much of the past tradition and custom, and am anxious and that India should be right herself, all cycles that bind and contain her, divide her people, and suppress vast number of them, and prevent the free development of the body and spirit. So I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from that past completely. I am proud to that great inheritance that has been and is ours. I am conscious है उसके लिए, link है unbroken है chain back to the down history in the immemorial past of India. और author क्या कहना चाह रहा है? He is not able to see the relevance of past. He is not much proud of. He is not interested in the history. They obstruct their physical and spiritual growth. So it is about the physical and spiritual growth. Option number D215. Because it can be inferred from the passage that India should rid herself. Okay. Next, desertification. जी term used in the process of decline in biological diversity, जब अगर एक biological productivity of ecosystem leading to the total loss पे आ रही productivity के साथ. While this phenomena is often linked है with the arid or semi-arid sub-humid ecosystem के साथ, even in the humid tropics में the impact could be most dramatic. Improvement of human impacted terrestrial ecosystem may exhibit itself in a variety of ways. Accelerated erosion, as in the mountain region of the country, salinization of the land, semi-arid and arid green revolution area of India, Haryana and Western UP, and site quality decline common phenomena due to general decline in the tree cover, monotonous monoculture हो सकता है, rice इन सबका, those Indian plains. A major consequence of deforestation is that it relates to the adverse
alteration in the hydrology and related soil to the nutrient loss. The consequence of deforestation invariably rise out the site degradation through erosive losses. Tropical Asia, Africa, South America, highest level of erosion है. The already high rates for the tropic are increasing at alarming rate quicker. Example, through the major river system, Ganga and Brahmaputra, the Indian context, due to deforestation and ill-suited land management. Practice subsequent to forest clearing. In the mountain context, declining moisture, decline हो रहा है mountain soil, drying up of the underground spring and smaller river in the Himalayas. Attribute to drastic change यहाँ पे हो रहा है forest cover में. And indirect consequence क्या है? Drastic alteration कहाँ पे हो रहा है? Upland और lowland interaction के अंदर, mediated through water. And the current concern, the tea planter of Assam, is about the damage of tea plantation due to frequent inundation along the floodplains of Brahmaputra and damage to tea production and consequence loss in the tea productivity due to rising level of the river bottom because of siltation and changing course of the river system. Ultimate consequence of site desertification are soil degradation and tracing in available water and its quality. Consequent decline in the food, fodder, foods, food up, yield up, economic well-being of rural communities is all. According to the passages of the following are consequence है decline in forest cover. तो forest cover की अगर हम बात करें, forest clearing and in mountain, declining mountain soil drying of country. तो Himalayan आपका smaller river, Himalayans could be attributed drastic change. River भी है and ill-suited land management. So loss of small river, adverse impact of agriculture, declining of groundwater. So here are all statements correct. Small river, adverse. 217 inference क्या है इसका? Deforestation cause change in the course of deforestation से ऐसा हो सकता है. Siltation of land, human activity only. How we can say only? इसको हम कट करके देखें. Only A. Option A is right answer. Dense monoculture. With reference to the desertification as described in the passage, कौन कौन से जंक्शन बन सकते हैं? Desertification phenomena है tropical areas only. ऐसी है. डिफोरेस्टेशन इनेबल टू फ्लड आ सकता है, डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है. नहीं माना इसको. डिफोरेस्टेशन फ्लड इस कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं. डेजर्टिफिकेशन आएगा लेकिन फ्लड का तो ठीक है. आई एम सेइंग इन अदर स्टैंड्स अगर उस जगह से अपने इसको हटा दिया एंड वाटर एक्ट एज एन बैरियर वो चीज ठीक है. डी ऑप्शन. A diversity of natural asset will be needed to cope with the climate change. Ensure productive agriculture. Natural asset है तो उससे forestry, fishery, for example, crop diversity, we needed that perform करें with the drought, heat, enhance or to. But the private sector and farmer led process of choosing crop favor homogeneity adapted हो to the past or current condition के हिसाब से. Not varieties capable for producing consistently high yielding in warmer, wetter and drier condition. Accelerated breeding program और need है हमारे. इसके लिए conserve wide pool of genetic resource के लिए existing crops में. Breed and their wide relatively intact ecosystem such as forested catchment mangroves, wetland, and the buffer impact of the climate change and the changing climate. These ecosystems are themselves at risk. Management approach will need to more proactive and adaptive होनी चाहिए. Connection between natural areas such as migration corridor may be needed to facilitate species movement with the changing climate. With reference to above passages the following will coping conservation होना चाहिए. Wide region migration corridor. The existing crop management practice we have and discuss option B. That is conservation natural resources का conservation of wide region and migration. Assumption कौन सी बन सकती है? Diversification of livelihood, coping strategy हो सकती है. Yes, we can say. And adoption of monocropping practice due to extinction हो सकता है. Yes, this is option C. Today's last one. The second last. Today's top environmental challenge क्या है? It's combination of people and their aspiration.
If the aspirations are more like the fragile one we had after the Second World War, is more possible than if view planet as a giant hopping molecular reactor. We need to get beyond the fascination with greater and understand करना चाहिए planet कैसे काम करता है biological system. तो कौन से है? Earth can meet only the basic need and human only. The only way to meet limit human population limit को कैसे मोल reducing our consumption is very much our interest. Knowledge of biological system can only help us to sell. देखिए यहाँ पे आपको या तो ये लेना पड़ेगा कि knowledge आपको रखनी पड़ेगी या आपको रिड्यूस करना पड़ेगा कंज्यूमरिज्म को. आपको ये कर सकते हैं. ये ओनली हेल्प ये नहीं करेगा. आपने चलो समझ लिया लेकिन आपको क्या पता वो समझने में इंटरप्रिटेशन आपकी गलत हो. सम पीपल बिलीव दैट लीडरशिप इज ए क्वालिटी है which you have at birth or not at all. The theory is false. But the art of leadership can be acquired की जा सकती है and can indeed or can be taught. ठीक है. This discovery is made in the time of war and result achieved can surprise even the instructor faced with the alternative of going left or right. Every soldier soon grasps that prompt decision either way is better than an endless decision. A firm choice for direction has an even chance of being right. To do nothing certainly wrong हो सकता है. क्या बताना चाह रहे हैं आप? Leadership can be taught through the war experience only. Leadership can be acquired as well as taught. Yes. Result of training show that people more acquire leadership can be. Despite rigorous instruction, few leaders are produced. ऑप्शन बी ही आपका ठीक है. जा सकते हो मतलब पढ़ाई भी जा सकती है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी. अभी हमारा 2019, 20 एंड 21 एंड वी विल ट्राई दोज अदरवाइज को हम ऑफिशियल आंसर के आने के बाद करेंगे. अदरवाइज अगर 2-3 में नहीं आया तो हम इसी से भी एक बार कर लेंगे दोबारा से आंसर के आने के बाद. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.